Hello, you're watching HornbillTV's Northeast Express. In some unfortunate news, a 22-year-old woman from Nagaland allegedly died by suspected suicide in Nagar area of Chikmagaluru, Karnataka, after being constantly harassed by two men. The woman, identified as Linsula, used to work at a private resort called Global Village Resort in Chikmagaluru and was supporting her family through her earnings, due to which she was said to be enduring the harassment. This came to light through her diary, where she named two men, Rajesh and Tejas. They have been harassing her, including pressuring for a relationship and physical and mental abuse. Following the incident, another Naga woman filed a complaint at the Basavanahali police station. Police have reportedly seized the diary and sent the body for post-mortem examination. Linsula's family in Nagaland has also been informed, and investigation is being launched. In a decisive and coordinated crackdown, security forces in Manipur on March 24th dismantled a network of fortified bunkers across multiple locations in the Ukhrul-Kamjong Hill Belt, including the volatile Mongkot Chepu sector under Litan police station, in a bid to break the cycle of sustained gunfire in the region. According to a Manipur police statement, simultaneous operations were carried out at several locations, resulting in the destruction of bunkers at Lengyanching and Mongkot Chepu villages belonging to both communities. A number of fired cartridges were also recovered, pointing to the intensity of recent exchanges. Visuals from the ground show security personnel dismantling sandbag tarpaulin-covered bunkers positioned along elevated ridge lines, underscoring the tactical advantage these structures offered in sustaining and directing fire. The recovery of large quantities of spent ammunition further indicates prolonged and repeated use of these positions. The crackdown comes in the backdrop of a civilian targeted firing incident on March 23 at Langthai Mall farmlands under Mongkot Chepu village, where farmers came under fire around 1 p.m. A young woman from the Kuki community sustained a bullet injury, while nearly 20 villagers reportedly fled into nearby forested areas and remained trapped for hours amid fears of continued firing before security forces moved in to secure the evacuation. Police said that with the bulk of bunkers on both sides rendered ineffective, incidents of firing have reduced considerably. Security forces have since established area domination through intensified patrolling and strategic deployment in vulnerable pockets. However, the situation on the ground remains fragile. Over the past 2 days, intermittent firing has been reported from at least 3 locations in and around Mongkot Chepu. In one such incident, 2 civilians, Raichan Lungaleng, 22, and Ringyui Ramro, 34, both residents of Sharkapung village under Kamjong district, sustained injuries. The area, located along the Imphal-Ukhrul Road NH202, continues to be a sensitive flashpoint. Sources indicate that despite the dismantling of bunkers, armed elements may still be operating from concealed positions in the surrounding hill terrain, raising concerns about the possibility of renewed escalation. Security forces have intensified vigil in the region, maintaining continuous patrols and reinforcing key positions to prevent regrouping or reconstruction of bunkers. TMC MP Sushmita Dev, who hails from Silchar and is looking after the state of Assam elections for our party, addressing a press conference at her residence in Kali Mohan Road in Silchar on Wednesday afternoon, said that they are fielding 22 candidates in this year's Assam Assembly election slated for 9th April. Sushmita said, "We have fielded candidates all across Assam, and especially candidates from all sections of society, irrespective of caste, creed or religion." She further said that the party has an organizational setup in 24 districts of Assam, but are fielding candidates from 15 districts of the state this time round. प्रदेश तृणमूल कांग्रेस की तरफ से हमारे नेता अभिषेक बैनर्जी, हमारे माननीय चेयरपर्सन ममता बनर्जी की तरफ से आसाम में 22 सीटों में हम चुनाव लड़ रहे हैं। इन 22 सीटों में हमने पूरी कोशिश की है कि हर कास्ट कम्युनिटी का एक कैंडिडेट रहे, क्योंकि ममता दीदी की जो पार्टी है वो ऑल इंक्लूसिव पार्टी है। हमारे लिस्ट में असमीज हिंदू है, हमारे लिस्ट में बंगाली हिंदू है, हमारे लिस्ट में एसटी है, हमारे लिस्ट में शेड्यूल कास्ट है, हमारे कैंडिडेट लिस्ट में ओबीसी नाथ कम्युनिटी से है। तो हमने सारा बैलेंस करके दिया है, और जहाँ पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर हमारा संगठन है, वहाँ पर हम उनकी वोट देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहेगा, और जहाँ पे हम टिकट नहीं दे पाए, हमारे 24 डिस्ट्रिक्ट्स में संगठन है, पर सिर्फ
15 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने कैंडिडेट दिए हैं। तो मैं संगठन के लोगों से क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि 51 सीट्स लड़ने से ऑपोजिशन यूनिटी का शायद नुकसान होता। हमने वहाँ टिकट दिया है जहाँ ऑपोजिशन अलायंस पार्टी बिल्कुल विफल हुई। तकलीफ हुई है तो उसको खोना नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें हमारा संगठन खत्म हो जाए। तो पार्टी का जो मतलब विजन था कि जहां जहां हमने संगठन बनाया, बोलो फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो इस बार तृणमूल कांग्रेस को कोई रोक नहीं सकता। सिलचर सीट क्यों छूट गया? देखिए सिलचर हमारा अभिलाष लगे। तो ये जो सेकंड टाइम में आप लोग ने दी, इस बार आप लोग कितना आइडिया कर रहे हैं कि कितना मतलब आप लोग जीत के आएंगे? देखिए पहले हमारे पार्टी में एमएलए थे, बोल रहा एसआईआर के बारे में, ईडी के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट को खुद गए। आफ्टर जो घटक दल है वो भी मुस्लिम पार्टी देती, उस वक्त आप लोगों का क्या ये है कि आप लोगों ने जिस जगह पे मुस्लिम लुरिन ज्योति जी का सिर्फ 3 जीत के आए, और हमारे बारे में कोई लिखता ही नहीं है, पता नहीं क्यों, मेरे में कोई कमी है शायद। तो तुष्टिकरण की राजनीति। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, एक और तथ्य सुन लीजिए कि पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा। Signs of internal discord emerged within Tipra Motha party on Tuesday after a section of its workers and leaders staged a protest over the reported replacement of a sitting member in the upcoming TTAA DC elections. Supporters of the incumbent MDC from the 24 Raima Valley constituency gathered outside the residence of party chief Pradyot Kishore Dev Burman in Agartala, expressing resentment over the alleged decision to deny renomination to Rajesh Tripura. The protesters warned that the move could adversely affect the party's electoral prospects, claiming that a substantial number of voters may withdraw support if the decision is not reconsidered. Party sources indicated that Rajesh Tripura is likely to be replaced by former MLA Dhananjoy Tripura, who had represented the Raima Valley Assembly seat between 2018 and 2023. He was earlier associated with the Indigenous People's Front of Tripura before joining Tipra Motha. Though the party is yet to officially release its list of candidates, the development reportedly triggered strong reactions among sections of its youth wing leaders who travelled to Agartala and staged a sit-in protest seeking a reversal of the decision. According to agitating leaders, attempts to meet Dev Burman and convey their concerns remained unsuccessful. They further claimed that nearly 22,000 voters could either shift allegiance or abstain from voting if the party proceeds with the reported change. No official statement was issued by the party on the matter. অন্য পার্টিতে যাইব যাইতো না, এটা এখনো সিদ্ধান্ত নাই, কিন্তু আমরা অন্য স্টেটমেন্টে বাইদ হইব। এটাই আমার নাম নবীন কুমার ত্রিপুরা, ওয়াইটি ব্লক লেভেল সেক্রেটারি। এখন পর্যন্ত কি মহারাজের সাথে কোনো কথা যিনি সোশ্যাল মিডিয়ারাव তিনি কিসা যিনি দরা হামিয়ানি ককমানো थांनानै फायमान बागै তিনি जों आरो फायमानि जों 24 रायमाय बिलिनि आं 24 रायमाय बिलि ब्लक लेभेल कमिटिनि वाइटिएफ सेक्रेटारि नवीन कुमार त्रिपुरा और तुम वाईटी ब्लक लेवल डिजिटल वारियर्स सब जोनल चेयरमैन वाइस चेयरमैन तेनी पार्टी प्रेसिडेंट सेक्टर सेक्रेटारि ऑल सिनी और पार्टी 24 रायमाय बिलिनि सिनी नेतृत्व फाइजाक और फाइमानि कारण उनका कैसा कौ अबन जदा पब्लिक डिमांड 24 रायमाय बिलियो सिनी जे सेटिंग ईएम तुंगनाय अबन पब्लिक डिमांड खायो गत 1-2 सप्ताह अनेक पब्लिक सोशल वायरल उंजा पब्लिक डिमांड राजेश त्रिपुरा कैंडिडेट नाने बगे पब्लिक डिमांड खायो अदरवाइज जों बीजेपी बाय फाइट खानन बगे असुक माने विदाउट राजेश त्रिपुरा जों पावरलेस उं थानाय बिनो बगे जों पाया उंनाय ओमफ्राय बिनो बगे जों पब्लिकनि डिमांडनि बगे जों इरमा फाइजा ताबसुजरा जों जे रिपोर्ट मामानि रिपोर्ट दया जों खानाका जिनि जे एक्स एमएलए आईपीपी नि फाइनाय धनंजय त्रिपुरा एक्स एमएलए बिनि पक्षे टिकेट थांग दङो यांग्रा पब्लिक रक जन कल खायसाका बीसी वाइज 21 बीसी दङो सिनि 21 बीसी नि लीडर्स ऑल पब्लिक न सावरका जदि ईएम टिकेट माया हिंकांक्लाय अन्यथा मांगांक्लाय जों अन्यथा जागा थांमानाय डिजाइन दनाय या अबाहाय सागो बिन बाय सिनि ई मेसेज ताबु शॉर्ट मेसेज दयो जतिनि ईएम उंगली आंगांक्लाय खाना जों टोटली 21 बीसी नि ऑल टिप्रा मथा जों डिजाइन फुल ऑल बीसी पूरा मोटामटी 24 रायमाय बिलिनि सिनि मदा हाते मोटामटी सिनि रायमाय बिलियो टोटल वोटार्स दङ 33000 24 रायमाय बिलि एडिशन कन्स्टिट्यूशन दङ सिनि हाते दङ 21 टा बिजनेस नि 22000 एबव वोटार्स दङ ऑल जों खाना रिजाइन नाय
যদি তিনি karan sini Rajesh Turprani bung tiket kuyang angklai jong all jong khana Tipra Motha ni resign nai jong samung khaya le obno sung request khayo bobagran bo public ni demand jate success ongate obosung sangni bagiya public ni bagai jong once way phailayo future 2019 ni simi ida joto waris tunai 2019 ni simi jong bobagran logere family still tabu bosung 2026 bobagran logere tungko tabu bobagran bisas khayo ida maximum all support from Russia bari leaders pura all joto Russia bani leader iro 24 mm bilini plus and Russia bani all support leader 24 mm bilini leader bini bagai 22 মোটামুটি 22000 মোটর ভোটার আছে আমাদের যদি আজকের ভিতরে যদি যেটা এই আমাদের রাজেশ ত্রিপুরা যদি প্রার্থী হিসাবে ডিক্লেয়ার না হয় অন্যথা নামের যদি নাম আয়া পড়ে আমাদের গ্রাউন্ডলিপুর ডাইরেক্ট আমাদের যারা নেতৃত্ব করছে তারা জানাই দিয়েছে আজকে এখন পর্যন্ত যদি আমাদের রাজেশ ত্রিপুরা যদি কেন্দ্রীয় এবারে প্রার্থী যদি না পায় আমরা অন্যথা পার্টিতে চলে যাব এইভাবে গ্রাউন্ডলিপুর আমাদের পাঠাইছে এই লাগে এখন আমরা এই প্রেস মিটটা করার লাগছে আমরাও যদি অন্যথা যদি এমন যদি রেজাল্টটা যদি অন্যথা হয়ে যায় অন্য নামের রাজেশ ত্রিপুরা যদি না হয় তাহলে আমরা কাছে 22000 মতো ভোটার আছে 33000 ভোটার মধ্যে 22000 ভোটার আমরা কালকে মধ্যে সবাই রিজাইন দেওয়া লইব আমরা কোনখানে ভোট দিব এটা পরে আমরা সিদ্ধান্ত নেব কত নম্বর করতে এসেছে কত নম্বর 24 I believe The Left Front in Tripura on Tuesday demanded deployment of central paramilitary forces in every polling booth for the upcoming TTAA-DC elections and by-polls, alleging that the prevailing situation in the state is not conducive to free and fair elections. Addressing a press conference, Left Front convener Manik Dey claimed that the elections are set to take place under unprecedented circumstances with reports of attacks on opposition parties emerging from various parts of the state. Dey also proposed the introduction of webcasting and scanner-based monitoring systems at polling stations to enhance transparency. He stressed that all political parties must be given equal opportunity to campaign, alleging that opposition programs have been obstructed in certain areas. These concerns, he said, have been communicated to the Election Commission. The Left Front further demanded adequate security arrangements for candidates, including the provision of personal security officers and protection for polling agents to ensure they can discharge their duties without intimidation. CPI State Secretary Milan Vaidya said voters should be able to exercise their franchise in a festival-like atmosphere, urging the police to play a proactive role instead of remaining passive. He also called for strict measures to curb the use of money power during the elections. CPIM State Secretary Jitendra Chaudhary said the demands were raised to safeguard democratic rights. আজকে রাজনৈতিক কথা বলবো না, এটা সম্পূর্ণ যে গণতান্ত্রিক অধিকার যাতে সুনিশ্চিত হয় সে সম্পর্কে যে কথাগুলি বলা হয়েছে তার উপর তিনি আলোচনা শুরু করতে গিয়ে বলেছেন একটা অভূতপূর্ব একটা আইন শৃঙ্খলা জনিত পরিস্থিতিতে গত 8 বছর ধরে যেভাবে চলছে এরকম একটা পরিস্থিতিতে এই দুটি নির্বাচন হচ্ছে, একটা উপনির্বাচন আর একটা এডিসির সাধারণ নির্বাচন। তার সাথে হলো এখন অব্দি আমি এডিসির কথা বলছি, আগামীকাল মনোনয়নপত্র দাখিলের শেষ দিন, এখন অব্দি এই নির্বাচনী লড়াইয়ে যা দেখা যাচ্ছে যে 5টা স্থানীয় এবং সর্বভারত রাজনৈতিক দল তো আছে, শাসক জোটে 3টা, আর বিরোধী দলগুলোর মধ্যে বামফ্রন্ট আর কংগ্রেসেরও আবার 3টা দলীয় জোট। তার সাথে কোন কোন জায়গাতে নির্দলীয় এসইউসিআই, সিপিআই, এমএল তারাও আছে। আমি মনে করি এটাও আরেকটা অভূতপূর্ব, অর্থাৎ সাম্প্রতিককালে কোন নির্বাচনে যে বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্রগুলোতে সবখানে পঞ্চমুখী তো আছেই,
পঞ্চমুখী ওই সবটাতে নাই, কারণ ইয়ে 9টাতে দিয়েছে, আইপি চতুর্মুখী তো আছে। আবার কোন জায়গায় যদি এই প্রার্থীরা তাদের প্রার্থীপদ উদ্ধারণা করেন, এটা পঞ্চমুখী, ষষ্ঠমুখী, সপ্তমুখীও হতে পারে। তো এই জায়গায় এটা ত্রিপুরাজ্যের জনগণের কাছে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের এবং গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচন হলো একটা মঞ্চ, যে জায়গায় মানুষ নির্বাচনী প্রচারে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং যে উদ্দেশ্যে এই এডিসির মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান বহু লড়াই সংগ্রাম করে গঠিত হয়েছে, তার স্থিতি কি, তার অবস্থা কি, এ সম্পর্কে বলার প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলি তারা এগুলি বলবেন, জনগণ এটা শোনার সুযোগ পাবে। গণতন্ত্রের জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা পরীক্ষা হবে আমরা মনে করি। তো এটা যাতে সুন্দর, স্বাভাবিক, অবাধ এবং যেটা বারবার বলছেন অতীতের ত্রিপুরাজ্যের মধ্যে আমাদের ঐতিহ্য আছে, নির্বাচন মানে একটা উৎসব। মহিলারা কোলে শিশু নিয়ে খোপায় ফুল বেঁধে ভোট কেন্দ্রে লাইনে দাঁড়ান, ভোট কেন্দ্রের বাইরে গ্রামীণ মেলার মতো মেলা বসে যায়, অস্থায়ী দোকান বসে যায়। সারাদিন মানুষ, বিভিন্ন দলের কর্মীরা, সমর্থকরা, ভোটাররা ভোট দিয়ে এসে গল্প গুজব করেন, সারাদিন কাটিয়ে দেন। এটা আমরা শৈশবে দেখেছি। আজকে এগুলো অতীত। 18 অব্দি ছিল, আজকে এগুলো অতীত। তো গতকাল আপনারা অনেকেই ছিলেন ত্রিপুরা বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের। Around 150 to 200 tourists have been stranded in Chungthang following multiple landslides triggered by heavy rainfall in North Sikkim, according to District Collector Anand Jain. Jain said the landslides occurred along key routes connecting Gangtok to Lachen and Chungthang to Lachen, leaving tourists en route to Lachen stuck at Chungthang. Tourists have been kept at the ITBP camp and the Gurudwara. The district collector informed that movement towards Lachen remains disrupted due to road blockages at multiple points. However, if weather conditions improve, authorities will assess the situation and may allow travel once routes are deemed safe. Meanwhile, the road to Lachung has been cleared and tourists from that side have been safely sent back to Gangtok. Authorities are closely monitoring the situation as intermittent rainfall continues to affect the region. In a heartbreaking incident, 3 young children lost their lives after drowning in a water-filled pit at Gangpi Moal village under Bezer Laikai in Manipur on Tuesday. According to sources, the victims have been identified as Sangmin Thang, 3 years old, and Lun Min Lal, 5 years old, both sons of Thangolen and Kap Min Lian, 3, son of Paul Muan. Preliminary reports indicate that the children accidentally fell into an open pit dug for a construction pillar, which had been filled with water and was left uncovered, posing a serious hazard. Reports said the children were immediately rushed to Grace Nursing Home for emergency medical attention. However, despite efforts to save them, all 3 were declared dead. The incident has triggered grief and concern among local residents who have called for stricter safety measures at construction sites to prevent such avoidable tragedies. Official sources later confirmed the incident, stating that the 3 minors drowned after falling into a water-filled construction pit at the Gangpi Moal village. Authorities said due procedures have been initiated while urging the public to ensure proper safety measures at construction sites to prevent recurrence of such incidents. The centre on Wednesday issued a clarification regarding LPG refill booking timelines and said that there has been no change in the timeline, as has been reported by certain news outlets. The government stated that the existing refill booking timelines remain unchanged and continue to be 25 days in urban areas and 45 days for rural areas, irrespective of connection type. The government further advised citizens not to believe or circulate such misinformation and also avoid unnecessary panic booking of LPG refills.
The centre also reiterated that adequate LPG stocks are available in the country and there is no cause of concern. A day earlier, the government also addressed a rumour on reports of 14.2 kilogram domestic LPG cylinders converted to 10 kilogram LPG cylinders. Sujata Sharma, Joint Secretary Marketing Oil Refinery, Ministry of Petroleum and Natural Gas, said it was highly speculative and there cannot be any comment or explanation to any speculation. बहुत इम्पॉर्टेंट बात 14 किलो को 10 किलो कर रहे हैं. दिस इज हाईली स्पेकुलेटिव एंड देयर कैन नॉट बी एनी कमेंट और एक्सप्लेनेशन टू एनी स्पेकुलेशन. सो इसीलिए मैंने अपना जो ब्रीफिंग आप लोगों को दे रही थी उसमें आखिर में यही कहा था कि अफवाहों पर विश्वास न करें. प्लीज डोंट बिलीव रूमर्स. दिस इज हाईली स्पेकुलेटिव. Prime Minister Modi on Tuesday called for combined efforts of the centre and state governments to tackle the challenges posed against the nation amid the conflict in West Asia. PM Modi today addressed the Rajya Sabha and called for a united voice promoting peace and dialogue globally as the ongoing West Asia conflict disrupts trade, energy supplies and affects the safety of millions of Indians in the Gulf. Calling the coming time for a major test for the country, PM Modi sought cooperation from state governments and asked them to implement the PM Garib Kalyan Anna Yojana. He added that the state governments must take action against black marketeers and hoarders to ensure the supply of essential goods to the public. Recalling the COVID-19 pandemic, PM Modi asked the states to take each necessary step and reform swiftly. The PM also announced that the centre has established 7 empowered groups to work for a swift and far-reaching strategy for fuel and gas supply amid the West Asia conflict. PM Modi said that the government has also formed an inter-ministerial group to assess the challenges. Acknowledging the global crisis amid the tensions in West Asia, PM Modi noted that the fundamentals of the Indian economy are strong and the government is ensuring minimum impact. He maintained that India has sufficient crude oil reserves and robust arrangements for continuous supply amid the ongoing West Asia conflict. माननीय सभापति जी, पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध और उससे बनी परिस्थितियों से हम सभी परिचित हैं. मैं आज संसद के उच्च सदन के सामने और देशवासियों के सामने इन विकट परिस्थितियों पर सरकार का पक्ष साझा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं. पश्चिम एशिया में चल रहे इस युद्ध को 3 सप्ताह से अधिक का समय हो चुका है. इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है. भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है. इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं. इससे पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर जैसे जरूरी सामान की रूटीन सप्लाई प्रभावित हो रही है. गल्फ देशों में करीब, आदरणीय सभापति जी, वर्तमान संकट ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है. अभी तक पश्चिम एशिया में जो नुकसान हुआ है उससे रिकवर होने में भी दुनिया को बहुत समय लगेगा. भारत पर इसका कम से कम दुष्प्रभाव हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं. हमारी इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं और सरकार पल पल बदलते हालात पर नजर रखे हुए है. सरकार इसके शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऐसे हर प्रभाव के लिए एक रणनीति के साथ काम कर रही है. भारत सरकार ने एक इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप भी बनाया है. ये ग्रुप नियमित मिलता है और हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आने वाली हर दिक्कत का आकलन करता है. और ये ग्रुप आवश्यक समाधान पर भी निरंतर काम करता रहा है. जैसे कोरोना के समय में अलग अलग सेक्टर्स की चुनौतियों से निपटने के लिए एक्सपर्ट्स और ऑफिसर्स के एम्पावर्ड ग्रुप्स बने थे, वैसे ही कल ही ऐसे 7 नए एम्पावर्ड ग्रुप्स का भी गठन किया गया है. ये ग्रुप सप्लाई चेन,
पेट्रोल डीजल, फर्टिलाइजर, गैस, महंगाई ऐसे विषयों पर त्वरित और दूरगामी रणनीति के तहत कार्रवाई करने का काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि साझा प्रयासों से हम परिस्थितियों का बेहतर सामना कर पाएंगे। सभापति जी, हमारी सरकार की कोशिश है कि ईंधन के किसी एक ही स्रोत पर ज्यादा निर्भरता न रहे। सरकार घरेलू गैस सप्लाई में एलपीजी के अलावा पीएनजी पर भी बल दे रही है। बीते दशक में देश में पीएनजी कनेक्शन पर अभूतपूर्व काम हुआ है। बीते दिनों में इस काम को और तेज किया गया है। साथ ही एलपीजी के घरेलू उत्पादन को भी बड़े पैमाने पर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सभापति जी, बीते वर्षों में सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि हर सेक्टर में दूसरे देशों पर निर्भरता कम से कम हो। And that was all for this hour's bulletin. For more news and updates, stay tuned to Hornbill TV. Goodbye.